हेलो। ये श्यामल जी जरा बताइए तो ये सेवन सेगमेंट्स एक्चुअली होते क्या है। अरे यार, तुम्हें कुछ पता है नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग सेवन सेगमेंट्स सीखने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नॉर्मल जीपीआई वो हैंडलिंग ही है। हम आउटपुट्स को मैनिपुलेट करेंगे सेवन सेगमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर सेवन सेगमेंट डिस्प्ले इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक सीखेंगे। और थोड़ा बहुत हम इंडस्ट्रियल भी सीखने की कोशिश करेंगे कि उसे कैसे करना है। ओके। तो एक काम करते हैं, मैं अपना डिस्प्ले शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर। कोई अगर कुछ इंटरेक्शन रहा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, सही बताओ तो। तो कितने लोग हमारे इसमें है जिनको सेवन सेगमेंट डिस्प्ले एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, उनको पता है? तो मुझे बता सकते हैं वर्बली, क्योंकि मैं भी आप सभी का फीडबैक नहीं देख सकता। तो कोई मुझे वर्बली बता सकता है कि सेवन सेगमेंट एक्चुअल में क्या होता है? ये उसका कुछ एक इलस्ट्रेशन है बेसिक, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या होता है क्या। हाँ, एक बेसिक इलस्ट्रेशन है सेवन सेगमेंट का। तो हम लिख देंगे क्या? जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक सेवन सेगमेंट है, जिसको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया। और काफ़ी सारे इसके पिन कनेक्शन हैं, जिसको या फिर क्या इसके पिन कनेक्शन है जो कि इसके स्पेसिफिक सेगमेंट के साथ में लिंक्ड है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 से 10 तक करके दिया गया है। ओके। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि सेवन सेगमेंट्स काफ़ी सिंपल हमको नज़र आ जाए, पर ये एक्चुअल में उतने होते नहीं अगर जब हम उसको कोडिंग की बात किया जाए। क्योंकि आप हर एक स्पेसिफिक सेवन सेगमेंट के हर एक बिट को या फिर हर एक पिन को आप हर बार कंट्रोल नहीं कर सकते, किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, वो सब पॉसिबल नहीं होता। तो उसके लिए आप एक तरह से ड्राइवर फाइल लिखते हैं, फंक्शन कॉलिंग ही रहता है, तो उसको भी आप इस तरह से बनाते हैं ताकि आप उसको काफ़ी अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर पाएँ। और हमेशा हर जगह एक ही सेवन सेगमेंट नहीं रहता, आपको मल्टीपल सेवन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मल्टीपल जीपीआईज़ लगते हैं और काफ़ी दूसरी चीज़ें होती है। और उसमें काफ़ी सारे हम ट्रिक्स भी यूज़ करें ताकि हमारी जो माइक्रोटोल जीपीआईज़ है वो कम यूज़ हो। तो हम कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे ताकि उससे हम उसको बढ़िया से हैंडल कर पाएँ। ओके। तो मुझे एक सबसे पहले आप सभी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जाननी है। आप प्लीज़ कुछ रिस्पॉन्स करना शुरू करें तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मुझे फीडबैक प्लीज़ चाहिए इस वक्त। एडमिन सॉरी फिर। हेलो। तो हम सबसे पहले एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि सेवन सेगमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा हर किसी से, प्लीज़ आंसर कीजिए कि सेवन सेगमेंट्स दो टाइप से प्रोवाइड किए जाते हैं, प्राइमरी दो टाइप्स होते हैं। तो वो दो टाइप्स कौन से हैं? प्लीज़ मुझे उसका आंसर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। Sorry, frankly speaking, I don't know the answer. ओके। यू वांट आंसर इन क्वेश्चन इन इंग्लिश, राइट? No, no, that should be fine. But ओके। answer, या आप आंसर दीजिए फिर। me Common answer anode. me. हाँ। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास में एक्चुअली में दो टाइप के सेवन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी आज बेसिक सेवन सेगमेंट्स पढ़ने वाले सेकेंड क्लास है।
तो मैं आपको क्वेश्चन जो है डबल से बताने वाला हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल इलस्ट्रेशन है एक सेवन सेगमेंट का। ठीक है, बेसिक सेवन सेगमेंट का कैसे होता है, इसमें 8 एलईडीज होते हैं, पर इसका जो कमर्शियल नेम और उसका जो मोर वेल नोन नेम है वो है सेवन सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो अभी सेवन सेगमेंट इंडस्ट्री में लगभग हर जगह यूज़ किया जाता है और हर जगह पे आज भी नज़र आते हैं और आज भी इनको वाइडली यूज़ करते हैं, न्यू डिज़ाइन में बहुत सारे नज़र आते हैं। तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है इसको शुरू करने से पहले, कि हमारे पास में कितने टाइप के सेवन सेगमेंट्स होते हैं। तो मैं जान सकता हूँ कि हमारे पास में एक्चुअल में कितने टाइप के सेवन सेगमेंट है। दो टाइप है, उनके टाइप्स क्या है, क्या आप आंसर कर सकते हैं? हेलो। कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड। यस, बहुत ही बढ़िया जवाब है। और क्या अगर आप मुझे ये भी बता दीजिए कि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, मतलब उससे पॉजिटिव कॉमन होता है कि नेगेटिव कॉमन होता है, मतलब क्या कॉमन कैथोड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मतलब क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि आप इंटरैक्ट करें ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। मुझे भी फीडबैक मिलता है कि आपको मैं किस तरह से पढ़ाऊँ, ताकि थोड़ा डायनामिकली आपको पढ़ाया जाए। अगर आप इंटरैक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ा पाऊँगा और स्पेसिफिकली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाऊँगा। तो या प्लीज़ आप इंटरैक्ट कीजिए मेरे साथ में। या बताइए ना श्यामल जी, कितने टाइप से होते हैं कॉमन कैथोड को, पॉजिटिव लगाया जाता है या नेगेटिव, कैसे कैसे? आवाज आ रहा है? या काफ़ी अच्छे से आ रहा है आपकी आवाज़। ओके। कॉमन एनोड माने कि वो कॉमन पॉजिटिव वहां पे हम लोग देते हैं और जो भी सिग्नल देना रहता है वो निगेटिव से आता है। कॉमन यस। कैथोड यानी वहां पे ग्राउंड या जो भी निगेटिव सिग्नल है वो वहां पे दिया जाता है और मतलब कॉमन किया जाता है और जो भी सिग्नल दिया जाता है वो पॉजिटिव दिया जाता पॉजिटिव किया जाता है। या है। जो थैंक कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। हमारे पास में एक्चुअली में दो टाइप के ही जेलिडीज अवेलेबल है, कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड। और जहाँ तक बात है मोस्टली वर्ल्ड में जितने भी सारे कॉमन मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन जो सेगमेंट यूज़ किया जाता है वो होता है कॉमन एनोड टाइप। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव उसका शॉर्टेड होता है और नेगेटिव हम उसको सिग्नल देते हैं। तो आप कभी भी अगर डिज़ाइन करते हैं इन फ्यूचर, मतलब कोई कमर्शियल डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप कॉमन एनोड डिज़ाइन को आप प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो पार्ट है, आपका जो बिल्ड ऑफ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो नियरली 25% तक ड्रॉप मार जाएगा अगर आप क्वांटिटी में अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और अगर आप छोटा मोटा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो डबल ट्रिपल होता है, पर एक दो पीस के लिए कौन केयर करता है। ओके, तो हम सबसे पहले हमें इस तरह से समझना पड़ेगा कि माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक्स से हमें समझना पड़ेगा कि उसको किस तरह से एक्शंस लेना है। ठीक है? और मैं आपको कोड बना के सिखाऊंगा कि आप एक ही कोड को कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड दोनों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आप में से कितने लोगों ने अभी तक प्रोट्यूस इंस्टॉल करके रखा है खुद के पास में? कोई मुझे आंसर दे सकते हैं उसका? हेलो। कॉमन एनोड,
यहाँ कॉमन एनोड ही चाहिए। श्यामल जी, मुझे एक चीज़ पूछना है आपसे। आपको पता है कि एक्चुअल में कॉमन एनोड ही सही में सबसे कॉमन यूज होता है कि कॉमन कैथोड भी होता है? बस आपसे वेरीफाई करना कॉमन एनोड बेसिक नहीं, कॉमन एनोड ही बहुत ज्यादातर यूज किया जाता है। हाँ। इंडस्ट्री में जो भी यूज किए जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि वहां पे ग्राउंड सिग्नल कॉमन मतलब दिया जाता है, सिग्नल एज ए सिग्नल डेटा वो ग्राउंड दिया जाता है। तो जो भी कॉमनली यूज होता है वो पॉजिटिव बेस यूज होता है, और जो सिग्नल देना रहता है वो ग्राउंड बेस देना रहता है। तो कॉमनली कॉमन एनोड ही प्रिफर किया जाता ओके, तो कॉमन एनोड ही हमारे पास में सबसे कॉमन टाइप है सेवन सेगमेंट्स का। ओके। है। यस। अब मुझे एक चीज़ आपसे जानना है। अभी यहाँ पर हमारे पास में एक इलास्ट्रेशन है हमारे सेवन सेगमेंट का, ठीक है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है, यहाँ पर ए बी सी डी करके दिया जा रहा है और यहाँ पर पिन कनेक्शन दिया जा रहा है। तो क्या है? और हमारा जो प्रोट्यूस है, प्रोट्यूस में इस तरह से नहीं दिया गया, इसका एक के साइड में एक अवेलेबल है, ठीक है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आठ है यहाँ, एक दो तीन चार, चार चार आठ, और ये वाला जो है वो कॉमन एनोड है, मतलब ये पॉजिटिव पे जाके लगेगा। तो हम ये काम करते हैं, पहले ही हम इसे पॉजिटिव को दे देते हैं। ओके, पॉजिटिव को दे दिया। और अभी इसमें एक कॉमन चीज़ है, ये जो सबसे लेफ्ट वाला जो पिन है ये हमारा ए बी सी डी करके जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्टली पिन यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे, ताकि मैम पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इशू हो रहा है इसे लगाने में, अगर ये सब इशू नहीं थे इसे हम देखिए। ओके, ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है। ठीक है। अम, मैं अगर सही कहूँ तो मैं काफ़ी टाइम के बाद में ये प्रोड्यूस को यूज़ कर रहा हूँ, देखिए काफ़ी टाइम के बाद में इसको। ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर वाला जो पिन है वो ए बी सी डी करके जी तक जा रहा है, ए बी सी डी एफ जी, सॉरी, और डी पी, मतलब डेसिमल पॉइंट तक जा रहा है। उसको डायरेक्टली वन टू का कैसे सीधा लगा देंगे, पोर्ट ए से पोर्ट एक तक, पोर्ट ए तक। ठीक है। ठीक है, पोर्ट, ठीक है। हम्म। वैसे मुझे एक चीज़ आपसे भी जानना है, जब तक मैं अपना बेसिक कोड लिखता हूँ। अ, मुझे आप सभी आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि आप सभी क्या है, क्या करते हैं, वो सब कुछ? हेलो। Hello, sir. हाँ बताइए। I have recently passed out.
and I am working in Gadia Electronics startup company ओके, at position embedded engineer. बढ़िया है, बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। एंड यू आर फ्रॉम साउथर्न स्टेट? हेलो, Maharashtra. ओके, आप महाराष्ट्र से हैं, अच्छी बात है। Yes, sir. मराठी तर तुम्हाला येतेच है ना? Oh, हो, छान की. मला 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 तुमची सारखी काय सांगू, गोड गोड मराठी नाही येत. where are you? अरे मी तर अ, विदर्भचा आहे, नागपूर क्षेत्र, आणि मी आता पुणेमध्ये आहे. Okay. Yes, पुणे. अभी मुझे एक सवाल पूछना है आप सभी को बेयर मेटल कोड. अभी सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम बेयर मेटल कोड से स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में मैं आपको हाल कोडिंग बताऊंगा कि कैसे करना है, और हम सेवन सेगमेंट का बेसिक कोड लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर एक छोटा सा पहले सेवन सेगमेंट बस उठाने की कोशिश करेंगे. ओके, तो ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि सेवन सेगमेंट थोड़ा बहुत काम कर रहा है. ओके, ओके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर सी से एच पी वन ई एन आर, एच पी वन ई एन आर फोटे जो है वो हमेशा हमारे फर्स्ट वाले में आ जाता है. ठीक है, इसी वजह से ठीक है. उसके बाद में क्या होगा हमारा, चूंकि है मोडल रजिस्टर साइट इनपुट एंड आउटपुट होता है, तो उसके लिए नंबर से कोड बनेगा, तो सेकंड कर देते हैं. तो इसको आगे हो गया, क्योंकि यहाँ हमारे वजह से चला जाता है. ठीक है, वैसे आपसे को पता बाकी कोई अपना इंट्रोडक्शन नहीं देगा यहाँ पर? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आपका आवाज़ आ रहा है, बताइए. ओके. मेरा नाम विकास है. आई एम वर्किंग एज एन सॉफ्टवेयर सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर. सो माय जॉब इज लाइक एन तो अभी evaluation of the suppliers who are doing or developing softwares for my company. So I'm working in Jaguar Land Rover at the moment, and I'm in Ireland. So this is a completely new area for me to explore. I have mechanical engineering, and I just wanted to explore my knowledge into the electronics and the software in embedded systems. बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है. एक नए फील्ड को आप समझना चाहते हैं. अब ज़रा बताइए आपको इस ग्रुप के बारे में, मतलब इस जो ये यहाँ पे कोर्स चल रहा है, इसके बारे में आपको पता कैसे चला? Actually, I was in one of the group where it was an embedded system related group, and I think I got your message and I started to link with you. ओके, गुड. अच्छी बात है, आप आ गए, और मैं आपको सही कहूँ, अगर आप शांत नहीं बैठेंगे तो फिर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा. कंप्लीटली शांत रहना भी काफ़ी हमें समय बेकार रहता है. मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा फीडबैक आना चाहिए कि भाई आपको अभी कितना समझ रहा है. जैसे ठीक है, आप मेरे ख्याल से मेरे फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे, राइट? नहीं था मैं. This is the first one. ओके, ये बात है, पहला है. Do you have recording, sir? Yes. जो पहले वाले का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया. मैं क्या किया, 8-9 महीने के बाद मैं अपना फिर से मतलब क्लास ले रहा हूँ मैं. तो मेरे साथ ज़्यादा सिस्टम्स नहीं था. ड्यूरिंग जब मैं क्लास ले रहा था तो मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम मुझे याद है, अरे
मिल नहीं रहा, और आज भी मैं रिकॉर्डिंग कुछ डाल रहा था, मैं भूल गया दोस्तों कैसे करते हैं। तो या Okay. लास्ट वाले का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ अपन, वो क्लास बहुत लंबा था, कुछ 6 घंटे चल गया था। ओके, तो यहाँ पर हमने एक मोरल रजिस्टर को रेडी किया है, जिसके अंदर बहुत बेसिकली मैंने कोड लिखा है ताकि आपको बेसिक समझा पाओ कि उसको हमें कैसे करना है। ओके, आप में से कितने लोगों को ये रजिस्टर, लीडरशिप के रजिस्टर्स पढ़ने आते हैं? मतलब डेटा शीट कितने लोगों को पढ़ना आता है, या कितने लोगों ने आज तक डेटा शीट का नाम सुना भी है? तो मैं जान सकता हूँ, प्लीज आंसर कीजिए। अगर नहीं भी मैंने सुना तो है, सुना नहीं है फ्रैंकली। आपने मतलब सिर्फ हम जानते हैं उसके बारे में, कोई पढ़ा नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डेटा शीट रहता है इतनी पता है, उससे ज्यादा कुछ पता नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा शीट्स को ही रेफर करने वाले हैं, तो आप काफ़ी ओके ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे कि डेटा शीट्स को पढ़ते कैसे हैं। आपने अगर ओके फर्स्ट लेक्चर लिया होता तो फिर हम अच्छे से मतलब आपको समझा पाते कि क्या कैसे होता है। ओके, तो ओके या तो मैं रिग्रेट रहेगा आपको, मैं एडमी की तरफ में मैं फिर से एक थोड़ा सा कोर्स ले लूँगा ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। आप मेरे फर्स्ट कोर्स में नहीं थे ना? नहीं। या कोई बात नहीं। और हाँ, आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअल में ये कोर्स काइंड ऑफ पेड है, कंसिस्ट फॉर वन सिंगल रीज़न। ये हमारा लास्ट सेशन है फ्री वाला। उसके बाद में आपको सिर्फ 150 रुपीज़ ही पे करना है फॉर रिमेनिंग जो जितने भी क्लासेस है। ओके, ओके तो बहुत बहुत माइनर पेमेंट है, 159 रुपीज़ है बेसिक। ठीक, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया था। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे हमने एक बेसिक रजिस्टर लिखा हुआ है। पहले हमने आरसीसी का लिखा है, जो कि जीपीआई का क्लॉक, जीपीआई का क्लॉक उसने हमने एक्टिवेट किया है इसको वन करके। ठीक है, स्पेसिफिक वन को, ये जो शिफ्टिंग है ये सब कुछ है, जो शिफ्टिंग का जो हमने ये यूज़ किया है, दिख रहा है आपको? ये लेफ्ट शिफ्ट, डबल लेफ्ट शिफ्ट दिया है, फिर लेस देन लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? Can you यस explain? Can you explain one? So why you are one left shift zero? Why you can do the one directly, right? Actually, I'm actually doing it one left shift zero here, just Mm-hmm. to just like for a person to understand that it's a zeroth position. It's not necessary, but it's just for the visual understanding. Okay, I understand now. No, how many you are shifting? You are letting know you. So Yeah, zero or shift one means one shift something like that. yeah, it's just to like for future understanding. So the person whoever is reading it in the future will have easy time to understand what actually we are actually doing here. It's maybe lot of code and lot of things are like it's not necessary or does not do anything, but it's just for a person to understand what we are doing here. Okay. Okay, understand, Yeah, understand. it's just for the visual understanding for the person whoever comes to next. This probably will no won't be like being used for like any development, but I'm pretty sure some people will probably going to like read it and review it, so it will be like little bit easier for them to understand. Okay. Okay, Okay. okay. Yeah. So first of all, what I have been done here is like motor register. I have to set the motor register just for like set the what is the pin mode is right there. As we can see here, every pin is in the like 2 bit. Every pin has like 2 bits dedicated to it to set its mode. Okay. For the input, it's 00. For general purpose output, it's a 01. And worst thing you have like seen here is that I have done a one specific task here is that GPI mode I ended with the negation of 0 x FFFF. Okay. So why I did it? Why actually I did it? Because so that whatever the values in these specific addresses will be reset to 0. Okay, it will be clear. And then I actually put up fresh values, that whatever value I want, I actually put into the motor register specific value and provided the shifting here so that every pin can be understood. Like the first here there is 0, it's the 0th pin multiplied by 2. We don't need to do it, but I did it so you can understand it. Second is the 1 multiplied by 2. And why I did the multiplication by 2? Because every single bit
has every single pin has 2 bit dedicated to it, and this shifting will do and this specific multiply by 2 will shift our provided value to specific locations we wanted to put it. We actually need to put here up to here. It is 7th bit. Okay, so that's the specific reason I did it. Okay, and as you can see, I did it to the 7th pin for the 7th pin. So set it to the motor as an output, general purpose output. We actually have the significantly more GPM more resistors to set, but I decided not to because they are most of the time are practically zero, and we don't need to do it right now. Okay, we don't have any need to do it right now. Okay. Actually, we have like few other like output type resistor. Yeah, I will do it. Just a minute. Push pull. Yeah, we actually do need to do pull down, and there is like data register or data register. This set, and there is also one lock. This alternate function. We actually show alternate function. Where it is. Push pull. Output speed, we don't need to do it. Output type, yeah. The output type is quite important. We need to put everyone into like a push pull mode, but as by default it's like 0 0, which means that every pin is like in push pull mode, so we don't need to do anything at that point. Okay, I just have to show you some pin movement and other things. So that's the reason we are actually doing it. Okay, so let me just do one thing. We are going to do it to the thing. So just one thing, it is going to provide GPIO a ODR set it to 0xFF. So we just need to do it 0xFF. Okay, and we just provide a HAL delay here normally. Delay. Provide it with like 1 second delay, and then GPIO a ODR. You can also use like reset register to set reset, but we just for the sake of easy understanding, we are not going to use that one. It may make it like a bit complex, but in the future we will use set and reset register for this specific task. Okay. Okay. HAL delay. 1000. Okay. We actually made our code here. We need to just do a small modification first in our project. So go to settings and we need to set it as set it to build .hex files. So now close, everything is set. Let's go to the properties, just provide the location from where we need to take a hex file. Project payment sequence symbol or some segment. Okay, we just need to like have a compilation first. Okay, now we can get necessary files. Just select the hex file, put it in the simulator, and let's just fire the system up. It is simulation error.
Real-time simulation failed to start. Simulation error. S5 volt. Okay, this is it. Now what? Oh, still what kind of issues I'm facing here? Oh, what kind of? Okay, we still have some issues for shift zero. Okay, because it's the common anode type, so for the every for the negative signal, it will glow. As you can see, the glow is off right now, as for the because it's in the high signal, indicated by those red boxes, and now we are getting directly like all the bits are just getting on and off. Okay, so we do need to produce some kind of a pattern here, like from 1 to from 0 to 9. So we do need to know that what kind of pattern can be created with this specific with the help of this hardware configuration. Okay, I do need you to like understand that we are using 0 to uh, A0 to A6 pins here. Okay, so we do need to remember this specific detail first. That A0 is A1 is like B, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Okay, so we do need to create an 7 segment display with considering this specific hardware and what pins are connected to this display and what pins are for what uh, LEDs are what segments. Okay, we do need to consider the hardware and build a firmware as per the hardware. Okay, let's get back to the our illustration of our 7 segment. Okay, um, okay. We do need to understand that right now our connection here is as per the ABCD type of configuration. Okay, so we do need to do one specific thing. Let me just start my just a minute. I'll probably be using let's just say Excel sheet for to teach you that how can we like make our 7 segments code. Just a minute. Students. Okay, let me just make an Excel sheet first. Sheet. Okay. So what we have A, B, C, D, E, F, G. Okay, we have G. Okay. Uh, I do need one help from you. I just don't know how to count alphabet in reverse. So I do need your help now. Okay. Can anybody help me count alphabets in reverse? Can anybody tell me what comes before the G? Hello? 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 Can anybody tell me what comes before the G?
F. F. Yep, थैंक यू। बस ऐसे ही मदद करते रहिएगा। एफ, एफ से पहले क्या आता है? E. ई। और ई से पहले? D. डी। और डी से पहले? C. ई। ई C. क्या C. आता है? C. 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 सी। ओके, वही C. सोच रहा था। सी। सी से पहले? B. B हाँ। and after that. C से पहले B. बी। और उसके पहले? A. ये। ठीक है। नंबर्स में हमें डालना है जीरो, Mhm. जीरो, वन, टू, Two, थ्री, three, फोर, four, five, फाइव, 6, 7, सेवन, एट, 8, 9. नाइन। Yeah, we will only put from like 0 to 9, whatever, that's all numbers we can provide. Okay, only a single digit number. I do know counting 0 to 9. Okay, so I'm not that big of an idiot that I can't count from 0 to 9. Okay, okay. Now we do need to know that what kind of values we are going to take. Okay, so we do need to know few things first, and I do need your help to understand it, but I will help you to create the first 7 segments, then you have to create the remaining ones. Okay, so here's the question: to create a zero, how many which segments you need to glow first? So, A, or B, C, A D, to F, huh? A, B, C, except D, G. F. Okay, besides G, we need to glow every single one of them, right? Exactly. Yeah, besides G. So the G will be zero, and the remaining ones will be one, right? Mhm. Yeah, remaining ones will Zero be. and ones is depend on the common and common cathode, na? Yeah, I know that, but I'm actually teaching them how can they like use the same code for a common anode and common cathode. They can actually I give them a small trick Okay, to do that. They will okay. be like, and I'm doing that in this way, so it will be like super easy for them to do. Okay, okay. What's come after the G? What come after the zero? It's one. So for one, how many which LEDs you need to glow first? Tell B, me. C. B B and and C. C. B and C. So B will be 1 and the C will be 1. Remaining ones will be 0. Okay? If I am wrong, just tell me I am wrong. Okay? B N Yeah, A. and for the 2, 2, I Except think C and F. F and C will be 0. F and C will be 0. F and C will be 0. Remaining ones will be 1. Right? No, no, you put for, yeah, that's right. Remaining will be 1. Remaining will be 1. We are doing this in this way to have it like a speedy development. Choose whatever is like smallest, put that remaining, and other ones will be whatever you want. For the 3, how many will be off right now? F and E. F and E will be off. They will be 0, right? F and E will be 0, and the remaining ones will be 1. No, no, you given G as a 0. Just check it out. F, okay, okay. No, F and E will be, yeah. okay, it is 0. Okay, F and E will be 0, and remaining I ones. saw yeah. Is it taking long time? That's okay. Yeah, it has to take time. Okay. For the 4, which one do you want to prefer? Which one you want to A like? AED was off. Okay, so we will provide like A will be 0, and then DE, you can say. D and E is 0. Yes. D and E is 0. Right? That's all. Yes. A, D and E, and remaining ones will be 1. So okay. Okay. After 4, just let
I just completed like the half of it, right? 4. So let's just test this code immediately, okay? We can, okay, just let me just do one more modification first here. I want to know what will be the binary code for this one will be. It will be 0B, 1, 1, right? 1, 1, 1, 1. Okay. Is this code the real code working, right? Code What 0B, is B? 0B, 0, 0, 0, It 0. should be 8 bytes, right? 8 bits, but you are giving you 6 bits, right? It has to be 8, right? One, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, I'm actually providing like 6. I can provide like 7 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7, yes, yes, yes. Yeah, well, I probably had made some error here. Like 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1. Yeah. Just correct me whenever I am wrong. Okay. Okay. For the next 0. one, You what put will the be like sequence? you have to put the 0 here also. Yeah. Binary last one. Last one is like 0, 1, 0. Yeah, that's correct. No, 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 110. Last Okay. one A is 0, right? Yeah. Okay. 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 Last one is 0. That's good observation. Okay. Next one. What will be the sequence? It is Sorry, 10. in bin in One. binary it should be 0 and 1 only, correct? Yeah, it should be 0 and 1 only Why you are writing B then? It's a because binary indication. yeah, It's a format yeah, we are. it's a direct code for that. We are just providing like 0B. We're just trying to like mimic what we are going to write inside the actual code here. So we are like providing some extra visual cues. Any programmer will know what it means. Any C programmer, and C++ programmer, any embedded programmer will directly know what we are writing here. Okay, okay, Okay. Yeah. If you are from Java and Python, you may have a little hard time to understand it, but for any low-level programmer, it is super easy for them to understand. Okay. okay, okay, Just normal standard procedure for the industry. Okay. So tell me, okay. what will be a 0B, 10, and 11, 0, 11, Zero one right? one. Yeah, that's Yep. correct. So for the next one, 0B, 0 B just a minute. 100 0B, 1, 100 0, 0, 1111. 1, 1, 1, 1. For the next Yes. one, 0B, 0 B 11 1, 1, 00 0, 0, 0, 110. 1, 1, 0. Okay. Yes. And can anybody tell me what will be the hex going to be for this one? DF. 0 hex. It will be 3F, right? Yeah. And for the this one, 06. 4, 5, 6. Yeah, 0, 6. Yes. And for this one, 1015. huh? 5B. 4, 5B. 5E. Yeah, 0, X, Wait, 5. 5E. Right. And for this one, 4B. 4F. 4F, right? F. Yeah, Yeah. 4F, 4F. And for this one, 6. 6, 6. Yeah, it's 6, 6. Yeah, it's 6, 6. We got like all the code we need and everything. Okay, we can like directly copy our code from here and directly put it in here. We will like put it in like global. Okay, uint8, uint8 underscore t, 7, pg, and segment, pattern, 8, rr. Okay. Can anybody tell me why I put this long of an variable name here? 7 second pattern Huh? 18. Understanding purpose. Yeah, it's just for the understanding it properly.
Okay. In the modern coding, we most of the time put like small, neat, and what should I say? Clean code. But sometimes the clean code is the biggest issue. Even your function should tell what it is for. That is like kind of a what should I say? That is like a cleanliness of its own. Okay, just put it like a constant here. We don't want it to like change or anything. Okay, and let's just put a small code like just some modifications here, ending and yeah, GPIOA ODR, and this will be a CV, 7 segment array, and this will be AV counter. So INT 840 LV CINT counter. LV counter. Yes, yes. Okay. And there will be like high delay of like 100 milliseconds. Okay. And there will be if LV counter is like more than 9. And reset to 0. Yeah. LV counter will be reset to 0. Just a classic code here. Okay. Let's just recompile it. And, okay. Let's just start it again and let's see what it gives us. 3. Okay. We did made some major faults in like making this code. Okay. That we do see like 3 and some other digits here. Let me just change it to like some other color so we can like easily understand what it should be. I'm pretty sure the color is like not so good to understand. Okay. I want to see G a second. Common blue, green, like green, red will be like again. I know. Okay. Something like let's put it like a higher voltage here first. And it's 6 minutes. This was okay. Maybe now you can see it much better. Okay, now it's like significantly better to see. So we did made some serious mistakes here. Yes, Okay, I think it's going to be in our
Okay, it's inverted. Okay, now as we can see that what it is inverted, that's like by choice. Okay, we can like change it like whatever we want. Just put a negation mark, as we can see here. You can see this small negation mark here. Yeah, and now we can like recompile it and let's see that is we made the do we had like corrected our issue. Okay, let's see 0 1. Okay, we do still have made uh, some major changes. Okay, the issue is एक्चुअली simple. here मीन्स 7 सेगमेंट उल्टा लगाया ना हमने यहाँ, हाँ इसीलिए समझ वो से मतलब मिरर दिख हाँ रहे हैं। या उसको हमने उल्टा कर दिया उस वजह से ये इश्यू हुआ है। हम इसको भी सीधा कर सकते हैं। ओके, हम हमारा जो ये पूरा जो सेटअप है इसको अब हम क्या करेंगे थोड़ा उसको आलस दिखाने वाले हैं उसको इसको पूरा को पूरे सेटअप को ही पकड़ के उसको ही हम लोग तो करने एक तरीका है मैं फोटो को काफ़ी दिन के बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कंट्रोल एम करना है या अच्छा जुगाड़ है ना 0 1 ओके 2 में गड़बड़ किया 3 सही है 4 सही है 6 में कुछ गड़बड़ है 7 में भी कुछ गड़बड़ है ओके बाकी हाँ बाकी को तो हमने दिया ही नहीं 4 के बाद में राइट हमने 4 के बाद पता है ना कुछ दिया नहीं है किस पे यस इस हाँ या दिया गया यस। या उस वजह से सारे इश्यूज आ रहे हैं इसके ऊपर तो मैं एक चीज़ चाहता हूँ आप सभी से मैं आप सभी को ये जो फाइल है इसको एक्चुअली मैं आधा मैंने जानबूझ के इसको आधा बनाया है ओके पर हमारे इसमें जो है कि इसको 2 में शायद से हमें इशू है तो इशू ये तो हमारे इसमें इशू हम पहले उसको सॉल्व कर देते हैं 0 1 2 में इशू है 3 4 तक हमने बनाया था तो 4 तक हमें बराबर आ रहा है ओके तो अब हम क्या करेंगे तो हमारा 2 में इशू था राइट तो 1 इधर है 2 इधर है तो हमारा 5 ई दिखा रहा है यहाँ पे एक काम करते हैं उसको रिक्रिएट कर देते हैं कि भाई हमारा इशू क्या है तो ये हमारा 2 का था क्या हमारे 2 के इसमें कुछ सा गड़बड़ दिख रहा है तो हमने क्या गलती किया है करके अगर 8 9 10 11 11 के लिए क्या आता है ए बी बी आता है हमारा ई नहीं है हमारे यहाँ पे बी है तो चलो देखते हैं इसका क्या होता है 5 बी है यहाँ पे भी 5 बी कर देते हैं रिकम्पाइल और ज़रा देखते हैं इसका इशू क्या है 0 1 2 3 और 4 ठीक है हमने इसको 4 तक किया है और जो बचा वाला जो सेगमेंट चेंजेस है वो आपके लिए काइंड ऑफ होमवर्क रहेगा कि इसको कैसे करना है ओके इज दैट ये चीज़ आप लोग कर पाओगे अगर कोई आंसर दे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा ठीक है Yes, sir. या उतना आप कीजिए क्योंकि मैंने आपको आधा बता दिया है आधा आपको करना है रिमेनिंग ओके मैं Actually, इतना I don't have Proteus schema of that one ओके software. यू डोंट हैव प्रोटीज राइट नाउ Yes, 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 yes. या नो प्रॉब्लम कैन लाइक डाउनलोड इट इफ यू वांट Okay. yeah you don't need to download Proteus or some other software for this specific task oh, okay and the second I have to like do it do this same thing in like a HAL coding too so let me just show you how can we do it let me just like make a new code here I just HAL coding is hardware abstraction layer, is it? yeah that's correct it's a hardware abstraction Okay. layer and I'm actually doing it in like both the methods just to like tell you like what kind of difference you will see and what like different is here okay I'll just provide like What, okay I'll just whatever we have done, that is in bare metal coding, correct? Is yeah it? that it is complete bare metal Okay. Okay. yeah now we will do it in the hall it's just for the single reason that you will understand the what the both the things are and lot of guys in our like courses are from like from Arduino or
from like the background who will it will just get them like super hard for them to understand. Okay, as you can see like all this kind of things here, right? Okay. Just for them to understand it much better. Nothing more. Yeah. We are here. Okay. Everything is like good and tidy. Let me just like delete most of the code from here, and the below code will be the same because HAL does not like properly support a lot of things, and I also don't use HAL too much. So, yeah. Okay. So we can use the same tool for bare metal coding and HAL HAL, is coding. it? Yeah. For the STM, you should always use like STM32 cube ID because it's the best tool you can get for the STM microcontroller. If you go for like VS Code or any other tool chain or any other development environment, it is not good enough. Yeah, the best coding environment for the STM is STM32 cube IDE. Is that free or It's completely we free. need to purchase? It's completely Okay. free. Yeah, everything from the ST is free. Every software and everything, you only have to pay for their hardware, like for STM microcontrollers and other things, which is like for nowadays it's like cheap as hell. Okay. For the Sorry, first can you repeat the name of that tool? STM STM32 Cube IDE. Cube Under, IDE. yeah. Okay. First we need to like initialize the. Uh, can you just turn off your microphone, please? HAL underscore RCC GPIO clock enable. Just like select it, and by just controlling like space control and just a minute. Hi मम्मी घर रहती यार एग्जाम के क्लास में थे अपन अब ऐसा इधर खत्म होने कॉल करो ठीक है चलो नहीं okay here the first and there is like a GPIO here type there just put like let's see 7 CGME and segment 10 okay for some segment pins dot how many pitch pins you want to use. Put here GPIO pin factor in as 0 from 0 and put every single pin everything from 0 to 7. Let's see. Control V, Control V. So we will be configuring here 7 pins, is it? What? So what we are doing this GPIO pin 0, pin 1, pin 2, pin 3 like that. Yeah, we actually configure it with the help of like a HAL's method. So we are configuring the pins, is it? Yeah. Input output pins. Yes. We're configuring the input output pins here. That's super important thing to do. Okay. So first we need to define how many pins would be there. Yeah. Yes, we need to define about which pins we want to use, and this like pins will like only this pins configure. These pins will be configured. Okay. Then we need to provide Okay, so which. So the values for this pin, is it? Yeah, not the value, but the mode. Which mode we want to put them in. Okay. Okay. GPIO mode DE mode as output mode, output push pull mode. That output PP is the output push pull mode. Then there is like 7 segment pin
pull up. We don't want any kind of pull ups like to put here. So there will be GPIO, no PUPD, no pull up. Then there will be 7 segment in dot speed. We do need to provide the speed of the controller or the pin speed. The GPIO speed will be like we just want it like low speed. We don't want like any high speed or anything. And then we need to initialize this port. Okay, GPIO initialize. So it will be like GPIO A address of 7 segment pins, and your code will be initialized to this method. Okay, every remaining thing will be the same. We compile it. So while it is compiling, we change the. So can you explain what you have done? Yeah, I'm actually going to explain it. I do going to explain it, but I do need to show that whatever I did is works. Okay. Yeah, I do need to show that first. I also want to like show you that I am proud of my work on all those things. Okay, it is 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, it does working. Okay, let's go. Okay. So let me show you what we did here. Okay. First of all, here is the HAL RCC GPIO clock enable. We do need to enable the every single peripheral clock. So we just call this small function here, which is the HAL actually practically a micro. We just call this micro to initialize our GPIO clock. Whenever you want to like make any modification in the any peripheral register, you need to initialize that peripheral first. Okay, that is the first thing you need to do. So what we did here, GPIO, CLOCK clock, ENABA. So this is just what we did. Then what we did here, we just called variable type. This is the variable type. सॉरी जीपीआई क्लॉक एनेबल मतलब हम लोगों ने क्या एग्जैक्टली क्या किया, क्लॉक को इनिशियलाइज किया क्या? या हमने उस स्पेसिफिक GPIO A है, हम क्या है GPIO A को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे क्लोज में जाएंगे तो ये क्या GPIO A पे लगा हुआ है, ठीक है। ओके पोर्ट ए पे लगा हुआ है, तो ये GPIO A का पोर्ट है पूरा का पूरा। तो हमें इसका क्लॉक पहले इनेबल करना पड़ता है हमेशा, जब भी हम किसी परिवार के साथ काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लॉक को इनेबल किया। क्लॉक इनेबल करते हमने सेकेंड चीज किया है कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को बनाया है। देखिए इसके लिए ये एक स्ट्रक्चरल वेरिएबल है, उसके अंदर में ये सारे स्ट्रक्चर के उसके खुद के इंटरनल एक्स्ट्रा वेरिएबल, इसके अंदर हमने इन वैल्यूज को ना पुट किया है। यहाँ पर देख रहा है इसकी पिन की इन्फॉर्मेशन, कौन सा पिन हमको यूज करने वाले हैं, बाद में मोड में हम कौन सा मोड यूज करेंगे, बाद में पुल अप पुल डाउन यूज करने की मोड यूज प्रोवाइड किया है, बाद में उसका स्पीड क्या होगा, और बाद में इसी वेरिएबल को हमने इस हाल के फंक्शन में पास ऑन किया है, जिसपे हमने पहले में दिया है कि GPIO A का हमारा पोर्ट है और ये हमारा सा कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज है, ठीक है, एंडिंग एड्रेस करके दिया। और ये जो फंक्शन है ये हमारा जो GPIO A है उसको प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करके देगा, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर सेट किए उस हिसाब से, हमने डायरेक्टली इसके पैरामीटर को सेट कर दिया और हम नीचे जाके डायरेक्टली हम उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इससे हमें थोड़ा बेयर मेटल कोड यूज किया है, पर जरा मुझे देखने दीजिए कि हम हाल में भी देख ले इसको लिख पाते हैं कि नहीं। ओके, हाल GPIO read pin, toggle pin, write pin, lock pin. Okay, we can only modify the pins, not the entire port. So we do need to use like the bare metal for that specific purpose here. Okay. Yeah, this is like the proper absolute basic for like 7 segments. We can do significantly more modification. I do need to you do small homework like use like buttons to like modify the remaining code and like change the numbers and other things. And I do want you to like fill in the remaining numbers that we are using like 0 to 9. I only made from 0 to 4. You do need to do it for like 0 to 9. I'm going to provide you the today's code in like a small RAR file, so you can like use it, simply use it and get started with the entire thing. Okay. Okay, is it like good enough? Yeah. Do anyone have आपने like जो any? सॉरी आपने जो कोड आप
कोड भेजोगे वो मैं टूल में यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, करेक्ट? या आप आपके खुद के सिस्टम में यूज कर सकते हो तो Okay. या Can you go back onto the हाँ HAL code which you written just now? ओके, अभी मैं उसको शेयर कर देता हूँ आपको डायरेक्टली। ओके, Okay. यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा स्प्रेडशीट का सब कुछ बनाया है, तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, Okay. डायरेक्टली एक आर्या बना के आपको आज का कोड दे देते हैं। जो आर्या जो भी 7 4 सभी जगह करके मैं अपने ये जो दोनों ग्रुप्स है उसके अंदर मैं ये भेज देता हूँ। मैं एक्चुअल में एंड ऑफ द कोर्स में एक गेटअप भी बनाने वाला हूँ, जिसको आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ओके, हेलो यस बताइए। सर, अब जो कोड आप ये शेयर कर रहे हैं, ये आप हैल के लिए और बेयर मेटल के लिए दोनों के लिए डिफरेंट कोड कर सकते हैं? या मैंने दोनों के लिए डिफरेंट कोड ये ही रखे हैं। आपको जब इसका आर खोलेंगे तो आपको हाँ दिखेगा जी, हाँ जी। कि दोनों का थोड़ा डिफरेंट कोड है करके आपको दिख जाएगा। आप उसका ये सर, खोलिए। व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन ये लाइक दिस हैल एंड द बेयर मेटल कोडिंग? The primary difference in the HAL and the bare metal is simple. That in the bare metal, you directly try to like modify all the resistors in this microcontroller, and you get significantly more access to every single aspect of microcontroller. But in the hardware abstraction language, HAL, you get the abstraction functionalities, which makes it easy to run this microcontroller. But you sacrifice your overall control on the microcontroller. Like we have already seen that you just with the HAL you can only control the pins, not the ports, by the entire port, that whatever that you want. For the specific 7 segment functionality, we did need to use uh, bare metal and HAL combined together to make it function. And HAL is like significantly easy to understand, but does have significantly higher limitations. For the person like me who knows the bare metal coding, we always try to not use the HAL code because it causes us to like work with a specific narrow method. And with the bare metal, you can use any method you want, whatever you can imagine, and whatever the hardware allows, you can do it. With the HAL, you have the limited scope to use. Whatever the HAL framework allows you, you can do only that much, not more than that. Thank you, sir. Okay. Anyone else has some questions? Sir, if we connect to a 7 segment displays, how can we can write a bare metal code? Here you written for 1 segment display an array. If we connect to 7 segment displays at a time Yeah, to display. at that case, you need to do two things. You have two options. You can use the completely different set of pins, which is like super inefficient thing to do, or you can do the scanning method. Or even if you don't want to do, even you want to go more efficient than that, you can go for this kind of display that I have made. And beside it, you have like a 7 segment drivers. You can see that 7 segment drivers here. Can anyone see that? Yes, sir. Yeah, this is a common cathode. This is a common anode 7 segment driver, which allows 6 displays to be attached, plus 16 GPIO pins to be used with this specific driver IC. And this specific driver IC uses only 2 pins from your microcontroller. So it's like a super efficient method to use external 7 segment system, which is like proper industrial method. But I do need to teach you the basics of the 7 segment so you can understand how to do it. If you can do that, you can also use this kind of far advanced methods. And the best part is that this small 7 segment IC costs only 7 rupees. So it's like super cheap to purchase. And in today's inflation economy, 7 rupees no longer holds the same value as 10-year back. So yeah, 7 rupees is no longer that much valuable at this point of time, and everything else also.
So you So this can use, complete yeah, PCB is the cost is 7 rupees, is it? only the this IC's costing is 7 rupees. Like, okay, only IC. Okay. Yeah, remaining things is on your own that what you want to cost it. Like for the displays, I pay like 12 rupees for like 3 digit display. 12 Okay. is like 24 rupees, and the PCB cost around like 5 rupees. So it's like Okay. what 12 to 24 plus 5 is like 29. 29 plus 7, how much it is? 29 plus 7, how much? 36. Capacitor probably 36. half a rupees. Yeah, so it's like 36, 30, 37 or something like that. It's cost like 37. Okay. Just round it up to like 40 rupees for this entire setup. So PCB is 4 layers or how many layers now? It is two-layer PCB. Okay, 2 layers. Yeah, you don't need like four layer for this kind of simple stuff. Okay. You just don't need it. Sir, the IC that you showed, the IC that you just showed is like it's the microcontroller or the yeah, like a It, seven segment it, it, specific it's IC. specifically 7 segment driver IC. I did made a universal driver for this specific IC. I personally made it, and you can use that driver IC to driver IC in any microcontroller you can find. Just made some basic modifications, just a small modification, and you can use that specific driver as driver for any microcontroller. I will teach you that at the end of this lecture, at the end of this course. Okay, Course. Okay. yeah, so at the final stages of the course. In my curriculum, I did not mention that all that, but I'm actually going to increase the size of my course. Actually, I'm going to add like three more classes at that at the end of the session. Okay, Okay. yeah, Okay. but you do need to complete the entire course for that to understand remaining stuff. So yeah, do need Okay. to understand all that. Great, sir. Great. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah, Next. and I need to clarify one thing. This is the final free class for my courses. From this point forward, every class will be shifted to my different group, which is like for to tell them that like only for the people who had like paid it. Okay, it's not much. It's just 159 rupees. Like just call it like 150 rupees. I did provide some link to pay. Yeah, I already paid. Yeah, a lot of people did paid them, and I did need to do one thing from you. Everyone who had paid me, and if they are not included in like different group, this is actually smaller group. Then just DM me directly in my WhatsApp. I will add you there. Okay, and DM me with like your the number which you have provided with specific uh, that I did made a like a small link to pay me. Okay, so that specific number. Okay, Yeah. yeah, yeah. I did made a registration link. Okay, form Google form. So do with that one. Okay, Okay. okay, okay. I do need to know if anybody have any problem in understanding what I teach you today. Uh, yeah. Actually, I was pretty new and I was idea was figuring out, but getting that complete project, I needed some guidance actually. Yeah, don't worry. You will. This course is designed in a way that everybody will understand what they do need to understand. Okay, at the beginning, I'm not taking it. I'm not rushing anything up or not taking you something drastic. Okay. Exactly, exactly. I Yeah, need a with the time it will be like a extremely steep slope. But yeah, you do need to understand it. You just need to complete the homework, and I try to keep everything engaging, and I do like people to engage because it energizes me to teach. Okay, I don't get sleepy at the beginning with that. I just like the interaction with everybody. Okay, what is Vikas and also Shamal? So I just wanted to understand how HAL programming you done. So there are 4 or 5 different uh,
programming lines you added. If you can share your screen once again. I just wanted to ask some questions on it, if you're okay with it. Okay, what lines do you want? You did have problem understanding. Okay, yeah. Here I understand pins. You define these are the 7 pins. Uh, what is mode, the output PP? What exactly does it mean? Well, the mode is output underscore PV means push pull mode. Push pull. Yeah, it's a push pull, and there is other is called OP. It is open drain mode. You do need to provide that specific information so that your Okay. GPR do works properly. In our specific need, we can also provide like open drain mode, but I don't want to like introduce you with that specific concept right now. Okay? I मतलब provided. मतलब ये है कि पुश पुल का क्या होता है, मतलब होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल दोनों दे सकता है, ये जो हमारा पिन है। ओके ओके और ओपन ब्रेन में क्या होता है कि हमारा जो जीपीआर पिन है वो हमेशा सिर्फ नेगेटिव सिग्नल ही दे सकता है आपको। ओके ओके। या तो मतलब उससे कौन सा मोड, पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए या सिर्फ नेगेटिव चाहिए, वो मोड डिसाइड करके हम हाँ लोग उसको डिफाइन कर बना सकते सकते, या हैं। पुश ओके। पुल का आप ऐसा मतलब पी पी लिखा है ना, हाँ हाँ। ठीक है, तो पी पी का मतलब पॉजिटिव 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 नेगेटिव समझ लो, पी लिखा है पहले। ओके और ओके ओपन ड्रेन जो है वो सिर्फ नेगेटिव सिग्नल देता है, वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका समझने का। ओपन ड्रेन मतलब नेगेटिव सिग्नल सिर्फ, और पुश पुल मतलब ओके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ओके ओके। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल? पुल में क्या एग्जैक्टली हम लोग ये करते वेल हैं? वी हमने यहाँ पे पुल क्या जो है, ये STM32 माइक्रोटोन जो होते हैं ना, उसके इंटरनल में पुश को दो रजिस्टर्स दिया होता है, मतलब पुल अप पुल डाउन। पुल अप एंड पुल डाउन। पुल ओके। डाउन तो नो पुल का मतलब है कि यहाँ पर हमने उन दोनों रजिस्टर्स को कट कर दिया, मतलब कि हम ये रजिस्टर्स को यूज नहीं करेंगे। यूज नहीं कर रहे। ओके। या नो पुल। पुल अप पुल डाउन यूज नहीं होगा। और यहाँ पे जो स्पीड दिया गया है लो, हम इसको काफी स्मॉल स्लो स्पीड में यूज करते हैं। रीजन ये है कि हम जो लो ओके। स्पीड में यूज करते हैं तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर कम पावर खर्च करता है और हमारा EMC EMI का भी इशू नहीं आता। ओके, And sir, when should we use like pull up and pull down registers? when you are using like buttons, external buttons, I2C communication, these are the most common way to use it, or in some method where you do want your pin to rise extremely fast, and or we want it to like go down extremely more faster than it is already doing. In that condition, you can use the pull up or pull down resistors. The primary need to use this internal pull up pull down is to reduce the number of external components you need in your circuitry. Can I explain? Yeah, you can also explain, Miss Kamal. Okay. Yeah. There is a means pull up and pull down registers. So अगर मैं हिंदी में बताती हूँ, ज्यादा अच्छा बता पाऊंगी। तो जब भी हमें कोई सिग्नल है वो एक्टिव लो से हम लेते हैं, तो क्या होता है जब भी लो सिग्नल लेते टाइम वो वहां पे जो भी जीपीआई हो या कोई भी सिग्नल हो, उसको हमें कुछ वोल्टेज दे के रखना चाहिए रहता है। तो वो वोल्टेज जो है, तो वहां पे एक रजिस्टर मतलब जो हाई वोल्टेज रहेगा हमारा वीसीसी या जो भी जो भी रजिस्टर है, जो भी वोल्टेज रहेगा वहां पे हम लोग वो रजिस्टर दे के रखेंगे पुल अप वाला, जो कि हम हमारा जो वोल्टेज है वो हाई पिक करके रखेगा। और जब भी हम कोई सिग्नल देंगे तो वो ग्राउंड के साथ पास होगा, तो वो ग्राउंड को मतलब शॉर्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वहां पे एक रजिस्टर दे के रखेंगे। जब भी लॉजिक वो दे देगा तो वो पुल अप रहेगा, और जब भी सिग्नल आएगा तो वो ग्राउंड अच्छे से दे पाएगा। तो ये होगा पुल अप रजिस्टर के लिए। पुल डाउन के लिए वैसे ही हम जब भी सिग्नल को कोई भी सिग्नल हाई देना हो और उसको वो सिग्नल लो पकड़ के रखने के लिए वो पुल डाउन रजिस्टर वहां पे मैंडेटरी है। तो ये मतलब पुल अप एंड पुल डाउन रजिस्टर हम यूज करते हैं वहां पे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पुल अप में हम्म। कोई भी अगर हमें लो सिग्नल देना हो तब पुल अप करेंगे। हाँ, राइट।
और अगर हमें हाई सिग्नल देना हो तो पुल डाउन करेंगे, पुल डाउन राइट? करेंगे। मतलब कोई भी जीपीआईओ को ऑन ऑन ऑफ करना है तो वो हाँ जी। जीपीआईओ लाइक अभी हमने 7 सेगमेंट लिया है, तो 7 सेगमेंट में हमने अभी क्या किया, कॉमन एनोड लिया है, और वो हाँ जी। कॉमन एनोड में वहां पे पॉजिटिव दे के रखा, और बाहर से हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव सिग्नल मतलब जीपीआईओ से दे रहे हैं। तो अभी वो हम्म। निगेटिव सिग्नल वहां पे आने के, निगेटिव कभी करेंगे हम, लॉजिक लिखेंगे कि वो ग्राउंड, वो जीरो वहां पे जाए, लेकिन तब तक वो क्या करेगा, कुछ तो पकड़ के रखेगा ना, लेकिन जीरो हाँ नहीं हाँ, जाना चाहिए, मतलब हाई ताकि सिग्नल वो जाना चाहिए। फ्लोटिंग ना रहे बस। हाँ या राइट राइट, फ्लोटिंग ना है। ओके तो ओके। उसके लिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वो पुल अप देके रखेंगे। मतलब ओके उल्टा रहता है, जब भी सिग्नल को हमें लो देना है तो वो पुल अप रहेगा, और हाई जब भी करके सिग्नल को रखेंगे। हाई देना है वो पुल डाउन रहेगा। ओके ओके। या यस, किसी और कोई क्वेश्चन है? एंड सर, जो आपने जिप फाइल शेयर की है इसमें बेयर मेटल एंड हेल दोनों कोडिंग है? या एक में जिसमें हाल लिखा हुआ है ना, वो हाल है, जिसमें हाल नहीं लिखा हुआ है वो बेयर मेटल है। ओके। या और उसके उन उन फाइल्स के अंदर में देखिए एक स्प्रेडशीट होगा, जिसके अंदर में हमारा वो जो 7 सेगमेंट हमने बनाया था कि कैसा कोडिंग होने वाला है करके। ओके। Okay. कृपया किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वो हमेशा बेटर रहता है। Sir, you said you included diver in that 7 segment IC. Whether it is a Linux device or that code or like bare metal code. Well, what I have made is for the bare metal. It is uh, it is actually primarily made for the microcontroller specifically. It is not bare metal, but it is made for the microcontroller. You can also use it in Linux, but you do need to do provide like significantly more authorization and provide extra pipeline to use it. Okay. Sir, how to start journey in embedded system? Well, start. I am pretty sure you are already like working in embedded systems, right? Komalji? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so I'm pretty sure you already started your journey in embedded, or I should say electronics. So you can simply like understand that what you can simply start by becoming better at developing things and try to post everything you do in like LinkedIn and also social media because recruiters are always following you. Second thing you can do is like try to do as many as projects you can and try to take as many work as you can, and plus stay away from the company politics if you can. So that's all you can do. Okay. Okay. And sir, what one should prefer, like HAL coding or bare metal coding? Well, I should say it depends on your own skill and from where you're coming from. If you are starting early, if you want to be a hardcore developer, you should know the bare metal coding and um, HAL coding is like super easy to understand. It will take you like a week to understand it entirely. But the bare metal, if you know the bare metal coding, you can do whatever you want with the microcontroller. So it depends on the condition and what you actually want to achieve. If you want to do whatever you want to do and want to be a hardcore developer and want to develop everything you want, then just go for the bare metal. If you just want to blink LED and do simple tasks, and go for the HAL. And it also depends on the where you're coming from. Like if you're coming from the Arduino background, then just go for the HAL. If you're coming from the IT sector, go for the HAL. But if you want to be someone, just say the biggest dog in the market or biggest dog in the field, just go for the bare metal. It will be harder, but
you will be strongest. Means if you want to dive deep into the embedded systems, so Yeah, just go for the HAL. Just go for the bare metal. o- Yeah, but okay. knowing the HAL is always better. Like me, I mostly don't use HAL, but in some cases I do use HAL. Like if you want, if the task is super simple and I don't have much time to do it, if you want, I want to do it faster. Most of the time go for the HAL. But if I want to make some very efficient systems, I prefer bare metal. And if person is just giving me a good money, so in that case, I also use bare metal. If someone is like giving me not much amount of money, I just prefer hard for them. Okay. Any other questions? Not much. Catch you tomorrow. Okay. और सर अगर कोई जैसे फैमिली स्विच कर रहा है, जैसे 8051 से किसी और फैमिली में जा रहा है, तो उसको कौन सी वो मतलब उसमें कौन सी लैंग्वेज काम करेगी, हेल या फिर बेयर मेटल? बेयर मेटल सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप आराम से कोई भी प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। ओके। या बेयर मेटल आपको आता है तो Platform independent actually. आप That's a सभी very माइक्रो से यूज़ कर पाओगे। पर मैं आपको बोलूँगा कि आज के समय में लगभग हर एक वेंडर उसका खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करते हैं, एसपी किट प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो आपको हर एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ में उनका हाल जैसा ही कोई फ्रेमवर्क मिल जाएगा। हॅलो सर. हाँ बोलिए। आपण जे काही प्रोग्रामिंग कोडिंग करतो सॉफ्टवेअरचे, हम्म। ते जर आपल्याला गिटहबला अप्लाय करायचे असेल तर कसे करायचे ते? अप्लाई मतलब वहाँ पे भेजना है या फिर वहाँ से निकालना है? भेजना है। तो फिर गिटहब का अकाउंट बनाइए, वहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कीजिए कैसे होता है। और अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आपका पूरी रिपॉजिटरी डिलीट कर दीजिए। ट्राई कीजिए, हो जाएगा। नहीं ओके. तो होगा, आप बस ट्राई कीजिए, ट्रायल एंड एरर, हफ्ते भर में सीख जाओगे। ओके. म्हणजे जसं जावा स्क्रिप्ट मध्ये कसं आपण हे करतो ना, डायरेक्टली ना। कमांड. हो, तसं. कमांड की आपको जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट से आप कमांड नहीं भेजिए, उसका जो मोस्टली लोग करते हैं VS कोड या फिर अपना कोई पाइचार्म यूज करते हैं, तो उसमें डायरेक्टली उन्होंने पाइपलाइंस प्रोवाइड किए होते हैं बैकग्राउंड का, जो आपको गेट बैश है उसके थ्रू पूरा पाइपलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो डायरेक्टली वो कर देता है वैसा। पर वो बैकग्राउंड में पाइपलाइंस यूज हो रहा होता है। तो अपन गेटहब में कैसा है कि गेटहब में आपको एक GUI इंटरफेस मिल जाता है। अब GUI इंटरफेस के थ्रू भी सेम काम आप कर सकते हो जैसा आपको कमांड लाइन के थ्रू होता है। ओके. हाँ, एखादी म्हणजे वो IDE का फ्रेमवर्क है, बस IDE का जो होता है ना फीचर वो है, आप जिसकी बात ओके. कर रहे हैं। या वो लैंग्वेज का नहीं है वो। ओके. हम्म। म्हणजे त्याच्यावरती एखादं सेशन घेऊ शकताल का तुम्ही? हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको 50 आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे। ओके. म्हणजे एखादी लिंक सेंड करता का? आप यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कीजिए, आपको 2 मिनट में हज़ारों मिलते हैं। ओके. ओके. ओके। ओके सर. और सर ओके। कोई अगर ऑलरेडी प्रोग्राम्ड एमसीयू है, माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें से हम कोई प्रोग्राम डाउनलोड भी कर सकते हैं? मतलब उसे प्रोग्राम निकालना है, हाँ जी, हाँ जी। निकाल सकते हैं, बस उस पर लॉक ना लगाओ तो। ओके। लॉक लगाओ तो आप नहीं निकाल सकते। और सर ये पता कैसे लगेगा वो लॉक्ड है कि नहीं? जब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तभी पता चल जाएगा। ओके। नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग मेथड है ना, उसमें रीडिंग का भी ऑप्शन रहता है, तो आप जब रीड कर रहे होते हैं ना, तो वो बता देता है कि सिस्टम ऑलरेडी लॉक हो गया है। ओके। ओके। या कोई और क्वेश्चन बचे हुए हैं? ठीक ठाक। ओके, तो मेरे ख्याल से आज का हमारा सेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। ओके, मैं इस आज का जो वीडियो है उसको मैं